Now, when we talk about the covalent molecules, the covalent compounds, and that is also your electrostatic force of attraction, but due to the sharing of the electron between a non-metal and a non-metal. So till now we have studied about the metallic bonding specifically in metals or seen in alloys. Ionic is between a metal and non-metal due to the transference of electron, and now we have the covalent, and covalent is again your electrostatic force of attraction. It's electrostatic force of attraction between nonmetals and nonmetals due to sharing of electron. Now we are aware of that. हमारे पास जो है different examples हैं. अब हम जैसे आगे proceed करेंगे वैसे examples करते जाएंगे. We need to understand there are three categories of covalent bonds. Number one, we have a single covalent, we have a double covalent, we have a triple covalent. जब हम single pair of electrons share करते हैं, we call it single covalent. For example, we have in hydrogen. For example, we have in HCl, right? So there is a single pair of electron being shared here. When we have a double pair of electron being shared, like for example, is oxygen, right? They're a double pair. So these dashes or these horizontal lines are denoting the type of kitna shared pair of electrons in. Okay? So this is a double covalent when you have a two pair of electron shared between the two atoms. Then the triple covalent is the one where you share the three pair of electrons between them. Okay. So example, the best example is nitrogen, or we have alkynes, they have a triple bond between them, carbon and hydrogen. Alkenes, they have a carbon carbon double bonds, right? And in alkanes, when you talk about the organic hydrocarbon, they will be always having a carbon carbon single covalent bond. So these are again the categories जो कि हम सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से पढ़ सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब पहले हम बिफोर वी मूव ऑन टू अदर थिंग्स, द प्रॉपर्टीज एंड स्टफ, let's do dot and cross diagrams of some common examples ताकि आपका single double and triple bonding का concept clear हो जाए, right? So as I gave you the example of hydrogen bond, because there is a sharing, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो atoms हैं, they have one electron, and in order to attain the nearest noble gas configuration, right, noble gas configuration, they need to have a configuration like helium, and helium has got two electrons, right? So it need to acquire or it need to share. तो यहाँ पर हमेशा हम इस तरह से लूपिंग दिखाते हैं शेयरिंग का शो करने के लिए. अच्छा, ए लेवल्स में एक और चीज है कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जब आप बनाते हैं तो आप उसमें इस तरह की लूपिंग नहीं दिखाते, बस आप इस तरह से यू विल बी शोइंग इट समथिंग लाइक दिस, यू विल बी जस्ट शोइंग इट कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बीच में आ गए. दिस इज हाइड्रोजन, यू विल बी शोइंग वन डॉट, and another hydrogen you will be showing another cross here. So this is an indication that this shared pair of electron is being shared by both the hydrogen. You don't have to draw the loops like this. ठीक है, तो ये आपका single hydrogen and hydrogen single covalent bond हो गया. Coming to the next example, let's see the dot and cross diagram for the second one. As I gave you the example for oxygen, so oxygen has got 2,6, 2,6, it is short of two electrons, both of them. So what is happening here? The two pair of electrons being shared, right? So यहाँ पर ये electrons जो हैं, ये दो pair of electrons यहाँ पर share हो रहे हैं. तो अगर हम ये वाला loop लेते हैं, if you talk about this, तो it has this oxygen has got 6 of its own, and two, these ones are acquired or shared by the other one. So it has got 2,6 of its own and two acquired or two shared one, not the acquired but the shared one, and hence it has a configuration 2,8. Similarly in this scenario again, तो इस सिनेरियो में क्या है, ये भी यही है कि आपके इसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में है, और ये जो है दो शेयर्ड वंस हैं, तो इट हैज अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2,8. तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पे शेयर हो रहे हैं. नाउ लेट्स सी द डॉट एंड क्रॉस फॉर द थर्ड वन.
In the third one, we have the example of nitrogen here. The nitrogen has got 5 electrons. तो 5 के अंदर यहाँ पर कितने electron pair share हो रहे हैं? We have the 3 electron pair shared. तो last shell has got 5 of its own. ठीक है, उसके पास 5 of its own है, और उसके बाद ये देखिए last shell has got 5 of its own. 3 and 2 5. तो ये वाले जो हैं ये शेयर्ड वाले हैं, जो दूसरे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो दिस इज हाउ द नाइट्रोजन विल बी हैविंग your shared pair of electron, and it is the best example for a triple bond. Now after seeing the the bonding, the dot and cross diagram, let's talk about uh, the properties of the covalent molecules. Okay, so the properties of the covalent molecules are that, okay, let's talk about the covalent molecules. They have got a low melting and boiling point. Okay, so aapka, they will be having the covalent molecule, they have a low. When you talk about the different type of bonds, metallic bonding सबसे strongest है, उसके बाद आपकी आती है ionic bonding, और उसके बाद आती है आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग. तो कोवलेंट बॉन्डिंग इज द वीकेस्ट ऑफ द थ्री. ये वीकेस्ट ऑफ द थ्री है. जो वीकेस्ट ऑफ द थ्री है, तो यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने के लिए यू जस्ट हैव टू गिव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज द रीजन दैट दीज कोवलेंट कंपाउंड्स दे हैव गॉट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनके लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं. क्योंकि इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, बिकॉज इनके पास इनका जो बॉन्ड है वो बहुत वीक है, तो लेस एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, एंड बिकॉज दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो दे नॉर्मली exist in either in the liquid state or in the gaseous state. तो इनका जो स्टेट जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो लिक्विड स्टेट होता है या गैसियस स्टेट. आयनिक स्टेट बहुत कम होता है, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो है. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, अब नाउ कम्स ऑन the other two properties about the solubility and about the conductivity. When we talk about the conductivity, तो इन आयनिक कंपाउंड, इन कोवलेंट कंपाउंड्स में कोई आपका चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो आपकी शेयरिंग की वजह से बन रहे हैं. ना तो नाइदर दे हैव आयंस, ना तो उनके पास आयंस होते हैं, और ना ही उनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स इनके पास है ही नहीं, तो दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल. ठीक है, तो ये दे आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. They will not conduct electricity. Why they will not conduct electricity? Because they don't have the charged particles. Neither they have ions nor they have electrons. Okay, so this is the property. This is the third property. Coming to the next about the solubility. अब अगर हम solubility in water की बात करते हैं, तो they are insoluble. ठीक है, they are, when we talk about the solubility, they are said to be insoluble in water. Why they are insoluble in water? The reason is they are insoluble in water because they are neither, इनके अंदर cations anions ने ionic compounds की तरह. ठीक है, और वाटर तो हमारा पोलर मॉलिक्यूल है. जैसे मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स की बात कही थी कि इसके अंदर कैटायंस और एनायंस होने की वजह से वाटर बीइंग पोलर, ये क्या करता है, अपनी तरफ ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द लैटिस को अट्रैक्ट करके बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से लैटिस ब्रेक डाउन होता है. अब यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, कोई कैटायन एनायन नहीं है, तो ये वाटर की जो पोलैरिटी है किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा. सो दे आर नॉट soluble in water, they are insoluble in water. Water के अंदर insoluble है, but they are soluble in organic compound. लेकिन they will be soluble, they will be dissolving in organic compounds, organic solvents. Organic solvents वो होते हैं जो कि खुद भी कोवलेंट बॉन्ड ही होता है उनमें. तो लाइक टाइप ऑफ बॉन्डिंग वाले केमिकल्स के अंदर अगर वो लिक्विड स्टेट में है, तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं. सो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल दे आर सॉल्युबल इन kerosene oil, they are soluble in ether, they are soluble in alcohol, etc. But they are insoluble in water because water being polar, और ये नॉन पोलर होते हैं. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द 4 केमिकल प्रॉपर्टीज शोन बाय द कोवलेंट मॉलिक्यूल. राइट.
Right now we have studied about the general properties of the covalent compound. Now we need to understand one thing, that the covalent compound are belonging to two categories. We have a simple molecules, very very simple छोटे छोटे molecules होते हैं, वो covalent molecules होते हैं, simple covalent molecules. Under this we have the examples of all the organic compounds. जितने भी आपके organic compounds होते हैं वो सारे के सारे covalently bonded होते हैं. जैसे for example you have methane, you have ethane, right? You have ethene, C2H4, and plenty of them. Apart from that we have chlorine. All the halogens, they exist covalently. Oxygen is there, nitrogen is there. We have acids, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, right? Ammonia, carbon dioxide, sulfur trioxide. All these are the simple covalent molecules, right? Now, apart from this, we are aware there are giant molecules as well. They're giant or they are macromolecules, ठीक है, जिनको macromolecules होते हैं, जो कि आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़े थे, मैक्रोमोलेक्यूल्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो सारे कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं. तो आपके पास जाइंट मॉलिक्यूल्स या आप उनको मैक्रोमोलेक्यूल्स कह लें. ओ लेवल्स में वी हैव डन फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस जाइंट और मैक्रोमोलेक्यूल्स. वी हैव डन द एग्जांपल ऑफ लेट्स से डायमंड and we have graphite. They both are the allotropic form. They both are represented. They are in the different states, but they are the forms of carbon. जहाँ carbon का arrangement different है, लेकिन अगर हमें depict करना हो symbol से तो हम उनको कहेंगे pure carbon. ठीक है. इसके अलावा हमने macromolecules पढ़े. Like for example, we have studied about nylon. We have studied about proteins. We have studied about टेरेलीन. ठीक है. और उसके अलावा आपने पढ़ा है पॉलिथीन. ठीक है. उसके अलावा आपने पढ़ा है टेफ्लॉन. तो ऑल दीज आर बेसिकली योर टेफ्लॉन. We have studied about PVC. This is all these examples you have covered in your O levels organic chemistry. So we have the two categories. The category number one, you have a simple covalent molecules, and you have the category number two, you have giant covalent molecules. ठीक है. अब हमने कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज तो जो पढ़ी हैं वो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं. दे हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट and they have low boiling point. They have a low melting point and they have a low boiling point, right? अब क्योंकि low melting and boiling point है तो इनका state या तो गैस है या फिर liquid है, right? उसके अलावा they are insoluble in water but soluble in organic compounds, right? They are soluble in organic compounds. ये property पढ़ी है. कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. उसके अलावा हमने पढ़ा है दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज आर बेसिकली प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड. कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रॉपर्टीज जो हैं हमने इनके हवाले से पढ़ी है. हमने सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल के रेफरेंस से पढ़ी है. तो जितने भी सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी बेसिकली विल बी शोइंग ऑल दीज फोर प्रॉपर्टीज. नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू द जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल, जब हम जाइंट या मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे हैव न्यूमरस कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है. ये जाइंट होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. मैक्रो मींस एक्सट्रीमली बिग. और यहाँ पर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं. या फिर अगर हम डायमंड एंड ग्रेफाइट की बात करें तो कार्बन के डिफरेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. आइदर इन द हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर इन द ग्रेफाइट और इन द टेट्राहेड्रल फॉर्म. यहाँ पर हमने नायलॉन और प्रोटीन की बात करें जहाँ पर इनके मोनोमर्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स बनाते हैं. पॉलीमर्स इज अनदर नेम फॉर बेसिकली और मैक्रोमोलेक्यूल्स. तो ये जाइंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूमरस कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं. और हम इनको सिंपल कोवलेंट बॉन्ड्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव फ्यू कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है. और इन फ्यू कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से इनको थोड़ी एनर्जी देनी होगी और थोड़ी एनर्जी की वजह से इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. अब बात आई क्योंकि इनके पास न्यूमरस लार्ज अमाउंट होते हैं तो यहाँ पर इनकी वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज आ जाती है. ठीक है. अगर हम कोवलेंट की बात करें तो वेरिएशन क्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इनके पास न्यूमरस है तो इनकी प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन आ जाएगी. इनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन जो आएगी वो आएगी दे विल बी हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट.
There'll be high melting point and they'll be high having the high बॉइलिंग पॉइंट। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है सिंपल और जाइन के बीच में? सिंपल इसलिए क्योंकि इसमें फ्यू कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन के पास सिर्फ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं C2H6 की बात करूं तो C2H6 में 2 कार्बन के बीच में और उसके अलावा आपके पास 6 हाइड्रोजन के बीच में, तो दे आर लिमिटेड। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, देयर इज अ डबल बॉन्ड। If I talk about the ammonia, you have got just 3 bonds here. If I talk about the carbon dioxide, it has 2 double bonds there. So there are limited, there are few covalent bonds. But when I talk about the diamond or graphite or nylon, they have a large number of, जिसकी वजह से उन bonds को तोड़ने की वजह से they have got high melting and boiling point. तो एक property difference तो ये आ गया। अब जब high melting and boiling point होगा तो इनका state automatically, इनका state जो है वो solid state हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं कोवलेंट और सिंपल मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स दे विल बी हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव गॉट फ्यूअर कोवलेंट बॉन्ड्स। अब लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वजह से गैसियस स्टेट में अब यहाँ हाई बॉइलिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव अ giant structure with numerous covalent bond and they have a high, that's why they have they exist in the solid state। बाकी जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, the property number 3 and property number 4, the property 3 and 4 remain same। The property 3 and 4 remain same. The reason is they will still not conduct electricity. They'll still not be the soluble in water. The reason they are not soluble because again, they are covalent compounds and they are non-polar in nature। उनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती जैसे वाटर में होती है। दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज यहाँ पर अगेन इनके पास कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं होता और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो इनकी प्रॉपर्टी 1 और 2 डिफर करती है लेकिन प्रॉपर्टी 3 and 4 दैट रिमेन्स द सेम। सो यू शुड बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल कोवलेंट एंड द जाइंट कोवलेंट और अ मैक्रोमोलिक्यूल और अ पॉलीमर, ठीक है। तो ये बेसिक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे करूंगी जब मैं स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक करूंगी, तब मैं आपके साथ डायमंड, ग्रेफाइट, फुल कार्बन फुलरीन, बकमिंस्टन फुलरीन, ग्राफीन, ये सारे आपके कार्बन के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट देम। और ये जो नायलॉन, प्रोटीन, पॉलिथीन एंड ऑल है, एडिशनल पॉलीमर्स जो हैं ये भी हमारे सिलेबस में जिनके बारे में, जिनके स्ट्रक्चर्स के बारे में we'll learn when we will be doing the organic chemistry। So right now I've just given you the idea what is the difference between a simple and a giant molecule। Now the giant molecule, one more thing, the giant molecules like the simple molecules, they also can have a single bond, they can have a double bond or they can have a triple bond in the structure। So there ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर सिर्फ single bond ही होता है।